this keyword. Okay, so to use the this keyword, why, first of all, you have to know why we have to use this keyword, what is that this keyword, and how to implement. So what is this keyword? This keyword is basically, it is used when your parameter variable and member variable name is same, to identifying the member variable we're using this keyword. Okay, so I know that you are not understand it what I say. So let me explain what is it actually, and I explain through the program so you understand it. Okay, so I define a class demo. I define a variable int a. Suppose I define a function void display function. Suppose I define constructor. Constructor is demo. So constructor name and class name is always same. Okay, and constructor is used for initializing the member variable. For initializing the member variable, we're using constructor. Okay, demo. Then here we're using constructor demo. Then I define here suppose in constructor it is contain a parameter n. Okay, member variable name a ଅଛି, parameter variable name a ଅଛି, तो हमें पास करिबा कोन a is equals to a. So here compiler get confused which a is the parameter variable and which a is the member variable. कोटा parameter variable रहिबो, कोटा member variable रहिबो, तो compiler हमर confuse हे जिवो. Suppose मु जदि एठी x define करिवि, if I define here int x, then you can easily write x is equals to a, so there is no problem. So here your member variable is x and parameter variable is a. But now if I define here member variable is a, if I define member variable is a, then now compiler here get confused which one is the parameter and which one is the member variable. So to identifying the member variable, okay, so compiler confusion हेले कहाँ हबो ना, एठी integer ପାଇଁ default value टा initialization करिवो, that is a is equals to 0. But ଆମେ ଯାହା ବି value दबा, suppose 15 दबा, ଯାହା ବି value दबा से by default 0 ही initialization कर दबा. To resolve that thing or to resolve this kind of problem, we are using here this keyword. This dot a is equals to a. So this refers to member variable. This identifying the member variable. This dot a is equals to a. This refers to the member variable. It is the first use. Okay, so when your member variable name, parameter variable name is same, to identifying the member variable, we are using this keyword. Next, we perform, it's saying that here, to resolve the ambiguity between instance variable means the member variable, and parameter variable, we are using this keyword. I show you example, then you will understand it, what is the basic actual need of this one.
Just a minute. It is an example of this keyword. Student 10 int id string name. Then here we are using a constructor student 10 id string name. This dot id equals to id, this dot name equals to name. Okay, now check here. Here student 10 is what? It is a class name. Then what is it? Eta kon kahiba? Sangeeta, Adi. Constructor. Yes, good. It is a constructor. Why it is constructor? Because class name and constructor name is always same. And this constructor is used to initialize the member variable. Member variable means the variable that you have to define inside the class. So in the class we define id and name. So this id and name is initialized here. Okay, so it is initializing the id and name. And if you notice here the parameter, it is a parameter id and name. Here id and name both are same. So first of all I remove it. I first remove this keyword, then check what is the output. Then first I remove it. int id string name, student 10 int id string name. So id is equals to id, name is equals to name. Then here we define a display function. So when I call the display function, it display you id and name. Let's check here. First, I am creating a object of class student 10 s1 equals to new student 10. So I am creating a object of class student 10. Student 10 s1 equals to new student 10. So here we pass 111 current. Student 10 s2 equals to new student 10 321 rn.
So we are passing two value, 111 current, 321 Aryan. So when I'm creating a object of S1, okay, so when I create a object of student 10 class, and automatically this constructor will call, mane a constructor amar call hobo. So when the constructor is called, as it contain the parameter, so your 111 is stored in ID and current is stored in the name. The parameter is stored. Then from the parameter it comes to what? Member variable. ID equals to ID and name is equals to name. Again, we're creating another object. Mu outre object banaili student 10 S2 equals to new student 10. Then again I pass the value 321 and Aryan. So when I pass 321, it store in ID and Aryan it store in the name. So when I store in the ID 321 and Aryan is stored in the name, again it comes to store in the ID and name member variable. Then it will display you. Okay, so for display the information को display करिए पे हमें function को call करें. ये जो object अच्छी S1 थ्रू रे मो display function को call करें and S2 जगह रे मो display function को again मो call करें. So I run the file now. So what is the output? Then I open the command prompt. I move to the D drive, D : enter. Java C file name .java. Then Java file name. See there, in both the cases, for ID it is showing you 0, for string is null. When we learn about the data type, okay, default value for all integer is 0, default value for string is null, default value for integer is 0, default value for string is null. Okay, so for integer it is showing you 0 and for string it is showing you null. So to solve this problem, to resolve this problem, here we define this dot id equals to id, this dot name is equals to name. Now I run the file here. Then I run here. So it is showing you 111 current and 321 Aryan. Got it? Sangeeta, Yes, sir. Pinky, Aditya, Bujila? Yes, sir. Okay. Aditya, पढ़ुछ ना बाहर कोठे बुलुछ? नहीं सर पढ़ुछ बा. हाँ कि नहीं कहून तमे किछि कहून रिप्लाई नहीं सर अधा अधा बुझी हो जे अधा बुझी हो. पूराटा बुझिया पे मते कहून मु आउथरे बुझिया पे मना करूछ ना कोन कोठी बुझी हेलानी मते कहून क्लास रेगुलर करो एते फिकिल लगो रु मु आउथरे मेटा पेस्ट करी मु आउथरे कहूछ रु कोठी डाउट हैला मते कहियो. अच्छा मते प्रोग्राम स्ट्रक्चर रे कोठी डाउट हैला मते कहियो. वो माने कोनटा डाउट रहला मते को आदित्य सर ने सर प्रोग्राम अथॉरिटी बुझे देबे.
देखो एटा आमे दिस कीवर्ड टा काहे की यूज करछे प्रथमे प्रोग्राम टा बुझो कंस्ट्रक्टर कोन जानि परलो एटा हला क्लास स्टूडेंट 10 एटा हला हमर कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट 10 क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम सब बळे सेम थाए तो आमे आगुरु पढिचे जे कंस्ट्रक्टर कोन पय यूज करिबा ना आमे मेंबर वेरिएबल टा को इनिशियलाइजेशन करिया पय कंस्ट्रक्टर यूज करियो मेंबर वेरिएबल माने कोन जो वेरिएबल गुडा को क्लास भितर डिफाइन करा जायतिबो ताकू को आजिबो मेंबर वेरिएबल क्लास भितर कोन डिफाइन करा जायछि ना आईएनटी आईडी और स्ट्रिंग नेम एटाला मेंबर वेरिएबल तो ये जो मेंबर वेरिएबल टा को आमे जदी इनिशियलाइजेशन करबा को चाहूचे ताले आमे कंस्ट्रक्टर यूज करियो अच्छा एठी आमे लिखि देले पैरामीटर एठी जो कंस्ट्रक्टर कोन हला कंस्ट्रक्टर दीटा पैरामीटर रखिछि पैरामीटर कोन काम करे ना आमे जेतबे कंस्ट्रक्टर कॉल करिबा रन टाइम रे बा प्रोग्राम जेतबे एग्जीक्यूशन हबो से समय फंक्शन को वैल्यू दवा पई हेले आमे पैरामीटर यूज करले तो एठी कंस्ट्रक्टर पाखरे में पैरामीटर देले int id and string name so this dot id equals to id this dot name is equals to name एठी id this कोन पई रिप्रेजेंट करा हला this for देखो एटा this यूज करा हला काहे के ना हमर मेंबर वेरिएबल नाटा होची id एठी ए वेरिएबल नाटा हला id एठी नेम एठी भी हला नेम सो मेंबर वेरिएबल एंड पैरामीटर वेरिएबल नेम टा सेम अछि तेणु आमे ए जो मेंबर्स को बा हमर मेंबर वेरिएबल टा को आइडेंटिफाई करिवा पई आमे यूज कले दिस कीवर्ड this dot id equals to id this dot name is equals to name okay so this dot id equals to id this dot name is equals to name this represent to the member variable okay जदि आमे this keyword न यूज करिवा ताले कोन प्रॉब्लम होतला ना इंटीजर पई एटा जीरो इनिशियलाइजेशन कला स्ट्रिंग पई नल इनिशियलाइजेशन कला जेहेतु आमे this keyword जते बेले यूज कले सेते बेले एक्यूरेट वैल्यू गुडा कटे शो कला इंटीजर पे 111 शो कला एठी आर्यन एठी शो कला एबे एठी देखो एठी एक्चुअली कोन रहउची हमें केमिति कॉल करिवा अच्छा कंस्ट्रक्टर केते बेले कॉल हुए ना हमें आगुरो जानिछे जेते बेले हमें क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबा सेते बेले कंस्ट्रक्टर टा कॉल हबो त हमर क्लास रो नाटा हैला स्टूडेंट 10 त एठी हमें स्टूडेंट 10 s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट 10 क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेले त एठी हमें पास कले 111 करंट वैल्यू पास कले अच्छा कोन पईटा डबल कोटेशन पास करा हला ना जेहेतु कैरेक्टर वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू को डबल कोटेशन में पास करा जाए कैरेक्टर वैल्यू जदी क्यार डाटा टाइप यूज करा ही तंदा सिंगल माने सिंगल कोटेशन यूज करा जाय तंदा क्यार रो जदी हमें सिंगल वैल्यू नबा बा गोटे कैरेक्टर स्टोर करियो जदी क्यार डिफाइन करबा मल्टीपल वैल्यू नबा डबल कोटेशन यूज करियो एटी इंटीजर पास कले इंटीजर पई कोनोसी कोटेशन दरकार नै तो डायरेक्टली हमें एटा वैल्यू को पास कले तो ए जो दीटा वैल्यू कहां बा 111 करण आउ जो 111 आउ करण एटा आईडी आउ नेम रे स्टोर होला ओके तापर जेताबे मु s डॉट डिस्प्ले करबी मते आईडी आउ नेम टा डिस्प्ले कला ओके तापर मु जेताबे लिखिबी s2 डॉट डिस्प्ले तला पुनी आईडी आउ नेम एठी मते डिस्प्ले कला ओके तो 331 एंड आर्यन एठी शो कला s1 डॉट डिस्प्ले कले ए डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कराला देखो मेंबर्स मानो को कॉल करबा को हेले हमको क्लास रा ऑब्जेक्ट बनाय पड़ियो जेताबेले हमें क्लास रा ऑब्जेक्ट बनौचे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होचे आउ जेताबेले हमें फंक्शन को कॉल करबा ऑब्जेक्ट थ्रू रे ही फंक्शन टा को कॉल करबा s1 डॉट डिस्प्ले s2 डॉट डिस्प्ले बुझियला आदित्य यस सर बुझियला सर okay so this ra आउ गोटे एग्जांपल हमें देखिबा व्हाट इज द एक्चुअल वर्क ऑफ दिस कीवर्ड you can call one function you can call one class constructor into another constructor by using this method so this is the word it is a keyword we are using another we are using this method okay so this method what it actual means
Okay, suppose I define a class demo, then here it is having a constructor, it is constructor rahila. So if it is a display what default constructor, so I am not passing any kind of parameter. I just giving an example, then after I go to the practical part. So it is a constructor. अच्छा मु याकू constructor बोले केमती जाउछ आदित्य कहि परिबो व्हाट why you are telling it is constructor? सर से मेंबर वेरिएबल टा को इनिशियलाइज करियो ना गोटे मिनिट सर क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम संबल समान तो हमें सेठी जानिबा गोटे मिनिट संगीता को how you सर कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम okay constructor name and class name is always same. Okay, so that you can identify the constructor, and constructor is a special type of method. Constructor is a special type of method which is not having any return type. आमे जरा function define करिवा function ना गोटे return type थाए किंतु constructor रा कोनोसी return type नहीं आर कोनोसी return type ही नहीं void नहीं तो आमे easily identify करिवा एटा कोसी constructor. Okay.
So now I define another constructor here, demo. Suppose it is having a int a. Now for calling one constructor into another constructor, here I use this method. ମୁଁ ଏଠି this method use କରିବି. ଯଦି ମୁଁ this method use କରୁଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ constructor ଅଛି demo method constructor ଅଛି ଏଠି ଆମର call ହେଇଗଲା. Okay, so this constructor is called here. ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଏଇ constructor ଟାକୁ ଯଦି call କରିବି ଏଇ demo ଟା automatically call ହେଇଯିବ. So this method is used for calling one constructor into another constructor. Okay, so let me show you how it is working actually. So I write the program here. ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି class this method class this method, then name is this method. It is a constructor. I define a variable int a. Then now here I show you system dot out dot println this is demo method. Sorry. This is default. This is default. This is default constructor. Then now I create another this method. Okay, so this method, then I pass here, suppose int a is equals to a. Hmm. ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ୱାର୍ଡ ଏକ୍ସେଲ ଟା କରିବେ ସେତେବେଳେ ମତେ ଟିକେ କହିଦେବେ। ଆପଣ टाइपिंग କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ କ୍ଲାସ୍
Okay, so let's check here the program I defined class this demo int_a. So it is a constructor this method and it is a parameterized constructor int_a. So this dot a is equals to a. I'm initializing the value. Then I print here system dot out dot println. So it is display you. This is parameterized constructor plus a. Okay. Now I'm passing the value a. A is now initialized here. But here what happened? I use this method. Here I use this method. Okay. So now I run the file. File, save as. See that? Now I run the application. So now you check what is the output. Java C dot Java, then Java, this is default constructor, this is parameterized constructor 10. Okay, so we're creating one object. When I'm creating a one object, this 10 is initialized here. Then we're using this method. एठी हमें this method use कले, जो this method use कले से automatic कौन ला ना default constructor टा को call कला. So this is default constructor. तापर कौन हला ए जो value अछि 10, ए 10 टा a रे initialization हैला. a रु आसे कि एठी हमर member variable जोटा अछि member variable initialization हैला.